Good morning, everyone. Good morning. Okay. Can anybody confirm my screen is available? Yes. Okay. So what we will do today is we will start understanding the different commands which we have in SQL. Okay. So what I can quickly do is I can just open one of the images from the Google, and then we can start understanding the different commands which we have under the SQL statements. Okay. Okay, so Ruchika and who is the other person who have joined from today? Just quickly unmute yourself. Akshay, ma'am. Akshay. So Akshay, till the time I open the image, can you just let me know about your background? Then Ruchika, you also please continue. Okay. Actually, Uh, I have 1+ years of experience in SQL, okay, and now I want to switch into Power BI technology. okay, got it. Good, you know SQL. Yeah. Okay, so you're working currently? Actually, I just left my previous job Okay, just to okay. switch to new technology. Yeah. Okay, but then you're aware of SQL concepts and all those. Yeah. Okay, okay. What about you, Akshay? Same, I'm currently working, but aware about SQL. You're aware about people. Okay, that's a really good thing because that is what the base we will be requiring. So for Akshay and Ruchika, what we have done is like we have covered all those basic concepts in the last 3-4 days. Like how do you create a database, table, inserting, like basic commands, right? Then like different types of joins. You both are already aware how joins will be helping you because these concepts are ultimately when you go to any BI tool, these are going to help you to design the model and test the data, right? So that is how we have started on the basic concepts. And today, what we have, yeah. Yes, so data modeling, this is a very basic what we have done because that is what is required to understand this visualization tool. So you don't need to understand the entire databases, entire SQL because that which you actually learn when you get on a project. So that is what I have done for the other candidates who are there who do not have a background of SQL and Excel. Okay, yes. So what we'll start today is we'll start understanding the different types of commands which we have in SQL. So for people like Shweta, Suhas, Sachin, Saloni, what we have done in the last 4 days is we have directly started with SQL because I wanted you to start with SQL and then come to the theoretical part, and that is what I have done. Now let's understand. I think somebody is there on unmute. Please mute. Okay, yeah, thank you. Akshay, please mute yourself. Okay, so now what we are going to do today is we are just trying to understand the different commands and how they are segregated together, the level of segregation. So if I just start with the very first command, so the very first command says, I just want a better picture. Let me see if I can open this image. Okay, yeah. So there are basically 4 types. Here I can see 4, but usually people do segregate them into 5 sections also. So let's go by first section, that is DDL. Second is DML. Then you have DCL. Third is TCL. And the fifth one, which most of them do not provide when you are working with types of SQL, but it is expected from you, that is DQL. Okay, so I can simply write it here for people for whom it is new. Okay, I already have it here. So DDL, DML, DCL, DQL, and TCL. So let's start understanding one by one. So what is DDL? So the full form for DDL is data definition language. Okay, so what happens when you're working with a data definition language? You have different commands segregated under this DDL. You have create, you have alter, you have drop, truncate, and rename. So now since last 3-4 days we are working with this commands only. So now you're familiar कि create क्या करेगा आपको help करेगा एक database create करने में, वो database में table create करने में, right? अब आपको वो डेटा के साथ में कुछ चेंजेस करना है, आप ऑल्टर कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, यू कैन गो विद ट्रंकेट, यू कैन रीनेम इट. सो बेसिकली व्हाट अ DDL command is helping you to do, so a data definition language helps you to define the database structure, or you can say it is helping you to define the schema.
So what is schema? Basically, you have database, then you have tables. So schema is nothing but collection of your object. So let's say if I go back to my databases, I can just help you understand here. Okay, so everybody knows this is the database. Under the databases, you have different structure. So this is nothing but your schema. Under the schema, you have all the objects together, and those objects are nothing but your database diagram, your tables, columns, key, and things like that. Okay, so this is a basic difference about DDL. And now everybody knows how we can work with all of these commands. Okay, now let's understand what is DML. So the full form for DML is data manipulation language, and data manipulation language will always come into picture after the DDL, because DDL is what आप कुछ create कर रहे हो, आप कुछ generate कर रहे हो, table का structure, table में data, things like that. So जब तक DDL present नहीं है, DML का कोई उसमें scene ही नहीं आता है. So DDL will be followed by your DML. So the full form of DML is data manipulation. Manipulation means it is allowing you to modify the database. आप कैसे modify करोगे? आप insert कर सकते हो. Everybody knows कि how do we insert the data, right? You can insert the data, you can modify the data, you can delete the data. अभी आप deletion, insertion कैसे करोगे? With the help of your alter. That is why अगर आपको DML के साथ में काम करना है, आपको DML related syntaxes डालना है, so you need to have it proceeded after your DDL only. Okay, so I'm repeating once again. It is known as the data manipulation language. The short form is DML. It will allow you to modify the databases. Let's say for the given instance, inserting, deleting, modifying, updating, and so on. So basically, it is responsible for performing all those types of modification which you want to do on the data which is present under your database. Okay, so now we know insert ने क्या किया है. Insert will help you to start inserting the data. Everybody knows the syntax: insert into table. Okay, and then the column, and then based on the column you can start putting your different data in the column. Now there are different ways of inserting. Okay, so let's say if you do not, let's say if I go back to my Excel here, we already have the syntaxes written. Okay, so let's say if you do not want to mention this particular data type, you can simply start adding your values, but then the values should be in a sequential manner. The tool will not accept if you are just putting column 1 का data, फिर column 3, फिर column 4. So you always have to go sequentially. Okay, अगर आपको column 1 में data insert करना है, followed with column 2, you want to keep it blank, या आपको null रखना है, still you need to mention the tool that this column will be blank for a particular row, something like that. But ultimately you have to follow the sequence. But if you're not giving this particular value or this particular syntax when you're creating something or when you're inserting something, it is very important कि आप उसका row का column का sequence follow करो. Okay, so this is about insert. Update we already know. We can update something based on your where clause condition. So update, जैसे आपके पास suppose अगर data एक ही level का data है, so you can directly go and update. But when you have multiple columns, multiple rows, so you have to be very specific. आपको कहाँ update करना है? So the where condition will be very important there. Otherwise सारा का सारा table update हो जाएगा. Okay, so we need to be very sure when we are updating, when we are deleting, we have to be very specific. Deleting where? Delete table from where? Delete record from where? So this conditions has to be there. Again, when you go for interview, it is expected out of from you. आप जब update और delete का कुछ syntax explain करते हो, या फिर आप उनको बताते हो कि मैंने कहाँ delete update use किया है, so they are expecting you to highlight we have used delete and update with the where condition. हमने where condition use किया था और particular table में, particular record में changes were seen. Okay, now let's move to DCL. So what is the full form of DCL is DCL is data control language. Again, DCL will come into picture after your DDL. Okay, so now DCL is very easy. This is mostly the database admins will be helping you to work with this. Developers usually do not work with the grant and the revoke commands of DCL most of the time. Let it be any tool. We are working with SQL Server 2019 version. Let it be MySQL, PostgreSQL, any databases you pick up. So DCL command is mostly governed, or you can say DCL command is mostly driven by the database admin. Okay, so the full form is data control language. It includes two commands, grant and revoke. So everybody knows grant. It's an English, normal English term. Grant means what? You're trying to give some rights and permission. आप क्या दे रहे हो? Grant कर
रहे हो, यू आर गिविंग समथिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द राइट्स एंड परमिशन टू द यूजर. So coming to databases, Grant क्या करेगा, with the help of your data admin, if he's giving you something, for example, if I go to my databases, see I have multiple databases created here, database 1, 2, 3, 4 and so on. But usually organizations में, let it be small scale, let it be MNCs, आपको सब databases का access नहीं होता है, because every database have its confidential data. So for example, let's consider this is my sales data, this is my finance data, this is my pharmaceutical data and so on. Now if your project is related to pharma, so your admin will be giving you access only related to pharma. He will not be giving you access to sales domain, to the sales database, to the finance and so on. Reason is, first thing, वो आपका subject matter expert नहीं है. First, second thing, it is not related to your project. Third thing, उसमें जो data, it is confidential to the organization and confidential to the client. That is the reason आपको उसका access मिलेगा नहीं. If you want it for some reason, अगर आपका data वहाँ पे कुछ है, or if you're working with that client, then you get the data. So now why am I emphasizing this? Because now companies know कि बहुत लोग training देके they come for interviews and they start manipulating the answers, they start putting answers in a practical way. That is okay, but they try to drill you down on this kind of a points. तो ठीक है, आपने कौन से डेटाबेस के साथ में काम किया है? So there are how many databases which you have access when you're working with a finance domain, or let's say if you're working with a sales client. So then you have to make them understand there were multiple databases, but just because my domain was finance, my projects was related to finance, we got the access for that. ओके, बिकॉज ये जो आपका सीक्वल सर्वर का जो सेटअप होता है ना, वो मोस्टली क्लाइंट सेटअप होता है, तो आप क्लाइंट के एनवायरनमेंट में जाके काम करते हो. सो इन दैट एनवायरनमेंट देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस, बट यू विल बी गिवन एक्सेस only to what is needed as per your project. So this is what Grant will do you. With the help of Grant, you will get the rights and permission. Now, on the other hand, what is revoke? So revoke is what, again an English term, it is useful to get back the permission which is given to the user. So अभी इसका example ऐसा है कि जैसे अभी आपने एक project पे 6 महीने तक काम किया. Now you have moved to project number 2, or let's say your domain has been changed. So in that cases, what will happen? The admin will again take those accesses which is aligned to your email ID, corporate email ID, and which is aligned to your username. So my username is Ruchika Rathi. My professional ID is, let's say, Ruchika Rathi gmail.com, something like that. So my accesses will be taken up from my user ID, and it will be similarly applying to my mail ID also. So even if I'm now trying and going and opening the SQL server, which is like which is having all the accesses, I won't be able to apply my credentials, and ultimately if I'm able to log in also, I won't be able to access the database which I was able to do previously. Okay, so again, these two are mostly governed by your database admins. Okay, now let's understand the TCL. So the full form is Transaction Control Language. What was DCL? DCL is your data. Okay, अभी यहाँ तक हम लोग data के साथ में work कर रहे थे. Now the fourth one which we have is TCL. So T stands for Transaction Control Language. Okay, or you can also say this command is used to deal when you're working with transaction related conditions within your databases. So there are 3 important, but we usually work with the first 2. ये दो ही बहुत important है. Third is like depending on your requirement, but then yeah, mostly this 2 will help you to get your data sorted. So first is commit. जैसे commit means what? जैसे again your normal English word. Commit means you're trying to save something. For example, अगर आपने किसी को commitment दे दिया, tomorrow 8 p.m. I'm going to come and meet you, right? We will be discussing our client related matters. We will be discussing how we need to plan this project, something like that. So what you're doing, you're committing something. That means you're saving something so that you will be available at that time for a particular discussion. So same logic applies here also. This command is used to save all the transactions in the databases. तो आपने जैसे ही suppose कोई transaction किया, तो आपको command क्या लिखना पड़ेगा? Just to confirm it. जैसे आपने भी जनरली हम लोग क्या करते हैं जनरल लाइफ में वी शेड्यूल अ कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर में किसी का टाइम सेव कर लेते हैं. सो सिमिलरली व्हेन यू आर वर्किंग विद एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू कमिट इट, तो आप क्या करोगे, आपको स्टेटमेंट में यू विल ऐड दिस सेक्शन दैट इज कमिट फॉलोड विद अ सेमीकोलन. ओके, सो कमिट मींस यू आर ट्राइंग टू सेव द ट्रांजैक्शन to the databases. Okay, so for example, if I just give you a simple example here कि commit कैसे work करेगा. So let's say we have the data city. Okay, so let's take it delete.
delete from maybe, okay, this table, delete from cities detail, where let's say, what do I have? Okay. Okay, first let me see if this is SQL is working for me. Okay. So I have a problem with SQL. Maybe I'll have to take access from somebody to make this happen. So, okay. So I like the statement here. Then maybe I can just deep down into somebody else's screen. So let's say, for example, under customer detail, I have a value that is maybe the city name. Okay. So let's complete this statement. Then we can move ahead. So let's say if the city name is, for example, okay, I think city name does not looks good here. Let me take a generalized statement here. So delete, for example, student, delete from, for example, student is a table, delete from student, where let's say I have the where condition as roll number. So the roll number is equal to, let's say, 35. Okay. So this is my basic command. And this is how your commit will work here. So what you're trying to do here is, with the help of your, it can be any command. It is not generalized to delete only. I'm just making a normal statement. So if you have a table, the table name is student. And if you want to delete from student, what do you want to delete? The way I said, when you're deleting something, when you're updating something, you should always have your where condition just being written after that delete and update statement. So that is what I'm doing. So I want to delete from students table where the roll number is 35. There can be multiple reasons. He is no more a student. He is no more available in the class, something like that. So when I'm doing this, I will be executing followed with commit. That means I'm saving this transaction to the databases. Okay, that is one thing. Now coming back and understanding how rollback will work after commit. So rollback will be working once the commit is done. That is how the chaining is. Okay, so now let's say if my commit is done here, so what a rollback will do? So rollback commands allow you to undo the transaction that has already been saved. Okay, so simple, you just have a rollback. This is how your rollback would work. Okay, so let's say I am writing it here. So this is the rollback, and again your statement would be, this will be a statement. So again, one important point, that this will work in your sequence. So when you're committing something, what commit is doing? Commit is allowing you to save the transaction to the database. Again, rollback is doing what? It is helping you. It is allowing you to undo the transactions that has been already saved to the databases. So how this two will work in parallel. Now there is a third one, which is save print. People call it save point also. I'll just write it here. So some call it save point, some call it save print. So it's like same command but different name. Save point, and then you have the save print. So the save print or save point, this command helps you to set a save point within a transaction. Again, this is not commonly used by the developers, by the you can say normal developers like us, like Power BI, Tableau, ClickView developers. This is again mostly the admins will be dealing with it. Okay, so just for understanding purpose, this command will help you to set a save point within a transaction. If you want to save something, so then you can take a help of this command. So again the syntax goes in this manner. So I'll write the syntax here. Okay, so the syntax is save point. Some tools will take it as save point, some will take as a save print. Okay, so save point, I think with SQL we have save point as the syntax here, and then again followed with a save point dot name. So whatever transaction you want to save at whatever point, then you can have this kind of a syntax. So let's say this is the syntax. Now if I want to put this into actual scenario, so save point, for example, your roll number. So you're just saving this particular column for that particular duration, for that particular within that transaction. Okay, so this is how your DDL, DML, DCL and TCL will work. Now let's understand the last statement, that is your yes, you have DQL. So in DQL, the full form is data query language. So in data query language, you have the select.
So there are many different ways. There are people who just make this 4 types as a part of whole, but there is also one way you can distribute this select under a different command line, that is DQL. So DQL will be having only one command, that is select. So some people add it under DML, but the right approach is to always add your select statement under your DQL. So the full form is data query language. So again, I'll go to my Excel and I can simply write it here for DQL. So it's the data query language where only one command resides under this, that is your select command. Now everybody knows we can execute multiple select statements together. Select is basically helping you to retrieve something, to see something which is already being added, which is already being saved in your databases, right? With the help of select, you can do multiple operations together. With the help of select, you can update, you can add your where condition. So select is not only to retrieve the data, but you can get the data with adding multiple conditions. Okay, so select, it can fall under DML, but the right approach to segregate your select is under your DQL. So the full form is data query language. It is used to fetch the data from the databases, and this is the only command which we have, that is your select. So select or your DQL will help you to fetch the data or retrieve the data. So this command is like selecting the attribute based on the condition. So the conditions, the way I said, we have already used it several times. Where conditions, okay, for example, so based on some conditions, you will be using your DQL, that is your select statement. So let me, if I just go back to this server, and for example, if I want to retrieve, select my first name, again, for example, from the student table with the help of your condition. So I'm doing a select, normal select will also work, but I'm just trying to make it with the help of your condition. So where, for example, again, if the roll number is, let's say, greater than or maybe less than, maybe again 35, something like that. So this is how you can design, and you can start retrieving your data from the different tables of the databases. So this is a basic understanding of how your commands will be helping you to segregate and how you can parallelly work with them. So this is a normal chaining. Again, when you go for beginner level interviews, they will always ask you, can you just list out the different types of SQL commands you're aware of? So usually people, what happens when we take interviews, they try to just get confused. यहाँ का इसमें बोल देते हैं, इसका इसमें बोल देते हैं. So what we do is we just give them a paper pencil. We'll tell them, okay, if this is confusing, just take a paper pencil, try to just put them into a simple frame of words. So in that section, this is the best practice. Always remember, पहले creation होगा. So आपका क्या होगा, पहले DDL, definition बनेगा पहले. Definition बनने के बाद में आप उसमें कुछ manipulations करोगे, changes करोगे. So it will be followed by your DML. After your DML, अगर ये चीजें बन गई है, then you will be giving rights to people to access it. जब तक कुछ बना ही नहीं है, उसमें कुछ changes आपने किए ही नहीं है, there is no point giving the access. Then you have the DCL. Then TCL means आपने access दे दिया, people are using it. Now if you want to say something related to saving, rollbacking, you have your TCL. And select, again, the way I said, DML में भी आ सकता है, DQL में भी आ सकता है. So not necessary कि DQL should be followed after TCL. It can also come here, but then whenever you're going for interview, just इसको याद रखो, पहले definition बनेगा, फिर आप उसमें manipulation करोगे, फिर access दोगे, and then you can commit what you are doing in the databases. So on the definition, what you have, you can create, alter, truncate, rename, things like that. उसके बाद आपने जब क्रिएट कर दिया, आप उसमें इंसर्ट करोगे. सो जस्ट इसी फ्लो को आपको याद रखना है. क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस, टेबल बना रहे हो, उसमें इंसर्शन कर रहे हो. इंसर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं. आपने इंसर्ट किया, आप उसमें चेंजेस कर रहे हो. सो DDL, DML, DCL एंड TCL. Okay, so this is a brief about your SQL commands. Now let's move ahead. So again, I need somebody's system to peep in because my SQL server is not working. Shweta, you there in the meeting? Shweta, you will have to help me present the screen. Let me just reinstall my SQL server today. Okay.
Just help me with this one thing, and meanwhile we can just look into the next sections which we want to cover today. Okay. Okay. So you can wait there because I'm just covering mostly theoretical today, and then we can go to practical session. So next difference which we want to understand is that is the difference between a DBMS and RDBMS. So I think Akshay and Ruchika, you're aware of this, right? क्या होता है differences क्या है पता है? DBMS, RDBMS. So these are mostly आपके interview related questions है ये. DBMS में like सारे tables मतलब सारे in the form of tables से रहते हैं. RDBMS में like हम उसका connection बनाते रखते हैं. Particular schema में particular tables और उसके connections रहते हैं. That is the relational database management system. What else? So then, Okay, no problem. Anyway, I'm going to tell, no problem. So you also agree, Ruchika, right? कि ये questions आते हैं when you go for interview level. So it is not beginner level. Even I with the 11 years experience, even I also go तो मुझे भी पूछेंगे कि DBMS, RDMS क्या है? And that is what we are just trying to cover. Now DBMS, let's start how you should start. Again, these are like interview perspective questions है, इसलिए मैं आपको उसी sequence में बता रही हूँ. So DBMS, RDBMS. So DBMS is a software used to store and manage the data. Okay, let me just put this into word. It is a software everybody knows. It is used to store and you can say manage the data. Okay, now DBMS, if I'm not wrong, I think ये कुछ 1950s या 60s में कुछ आया था market में. During that time, it was evolved. Okay, it also offers you. अब जब ये DBMS है तो ये आपको क्या offer करेगा? It will offer you for insertion, it will offer you for deletion, and it will offer you for updation of the data. This is what a DBMS is going to do. Okay, now let's understand more about the DBS system. The way I said, it is a software. Okay, when you are updating, inserting, deleting, ultimately what you're doing, you're controlling the database. You're controlling the database here. Okay, now this DBMS, that is usually designed if you want to create and maintain the data, and for a individual business you can say, or you can say if you want to create and manipulate the data or maintain the data and enable the individual business application to extract the desired data. So इसका main काम क्या है? जैसे ही database में data आ जाता है, it is open to all the users to go and extract the data for better decision making. So what these tools are ultimately going to help us for this better decision making. और better decision making हम इस data पे करेंगे, but it will be followed with what? It will be followed with your data visualization tool. So data visualization tool will be helping us to present that data in the forms of reports and dashboards. Okay, so ये एक section हो गया आपका DBMS के बारे में. अब DBMS में से हम लोग क्या करेंगे? हम data को extract करेंगे. So who are the people who are extracting? It can be users, let's say sometimes it can be client also, and it can be your database admin. Even if they want to do something, they can, like at a given interval of time, if they want to check the check some levels in the databases, even they can access. But who are the main people who are going to work with this data? It is mainly the developers, okay, the database developers and the developers of the data visualization tool. That is people like you and me. Okay, now in DBMS, what happens is basically data is stored in the form of tables. Okay, यहाँ पे भी data आपके form tables के form, no, not in, sorry, my bad, not in the form of table. In DBMS, data is stored as a file. Okay, so this is very important. That is why मैंने एक blank रखा था यहाँ पे. Here the data is stored in the form of a file. But when you talk about RDBMS, the full form is Relational Database Management System. And here it is only Database Management System. So Database Management System एक बहुत ही old software है. उस पे से नया software derive किया है, या आप बोल सकते हो RDBMS is just the upgraded version of your DBMS. Whatever you highlight in the interview, आप अगर ऐसा भी बोलते हो, it is the upgraded version. They are not they are the two different applications. No, I mean for sure. But ये कैसा derive हुआ है, ये completely different नहीं है. It is just, you can say, it is just the higher version
or the updated version of your DBMS. So the full form is Relational Database Management System. The name itself has relational, तो हर चीज इसमें रिलेशनशिप में ही फॉर्मेट में सेव होती है, तो डेटा रिट्राइवल बहुत इजी होता है. सो नाउ कमिंग टू RDBMS. सो RDBMS विल स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो हमने ऑलरेडी देखा है. सो RDBMS सिस्टम कौन सा हो गया? आपका SQL सर्वर, आपका Postgre, आपका AWS, Redshift, Snowflake is the new database. So all these come under the RDBMS system. अब DBMS के अंदर कौन से आते हैं? बहुत सारे ओल्डर टूल्स है जहाँ पे आज भी कुछ कंपनीज है who do not have a very big budget of handling a RDBMS system, RDBMS platform. So they do prefer using a DBMS, but 85% of the companies are working with the software that is RDBMS only, because वहाँ पे security is better, data is arranged in a more structural manner, and the retrieval is faster, the speed is faster. उसका जो size है, the volume which it handles is way better than DBMS. That is why the world have already moved to RDBMS, and that is how the current companies are also, they have already collaborated, and that is how the work is going on. Okay, so this is about the origin. I think this has origin some like 20-25 years back, but this is like a very older software. Now again, coming to the differences, again, your DBMS will support a single user, while your RDMS will support multiple users. This is also one very, very important point. That is why the world have moved to RDBMS, many years back. So here you have multiple users. Here you do not have multiple users at a given instance of time. So now these two differences remain the same. It is also helping you to store the data, manage the data. But here multiple users can work on a single database. Multiple users can work on मल्टीपल डेटाबेसेस. तो ये यहाँ पे सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को एक्सेस दिया माई ट्रेनिंग का, फॉर एग्जांपल सलोनी, श्वेता, सुहास, if they are having access for my training, all three of them can work together with their credentials. Everybody will have their credentials on the enterprise version. Now if the remaining 3 people who are there in the training, if I give them access to, let's say, my coaches, so they can at the same time, multiple people can work on multiple databases, and they can start retrieving and working with the data. Okay, now coming to the next differences, DBMS has a low software and hardware requirement. Here you can say you have a low software and hardware requirement, but when you're working with RDBMS, rather saying a higher software, you can say the softwares are very standard here. You can say higher, no doubt, but the other word is you need a standard setup of hardware. So people who have already installed with the SQL Server, you know that there's a proper method you have to get it installed. You need the help of different software. So when you install SQL Server 2019, you also need SSMS. So there are 2 ways. See, when you're installing SQL Server 2019 or maybe let's say 2021, so there you have one option which says install the background tool. तो आपने जब वो ऑप्शन क्लिक कर दिया ना, तो आपका SSMS भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है. बट देन पीपल हु आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, आपको पता नहीं होता कि वो फीचर एक्टिवेट करना होता है. तो SSMS भी वो SQL सर्वर मैनेजमेंट 2019 के साथ में आपको आ जाता है. But if it is not getting installed, then you have to go to the website. आपके पास में dedicated link होता है, install the SSMS, and you can do it. But usually what admins do is in the same setup, when you check the option, both of them get installed, and then you can start working on it. So here the main difference is the softwares are not very high performance. The software requirement is like lower, and that is how people who don't have a very high budget companies like small scale, that is why that is also one reason कि वो DBMS के साथ में काम करते हैं, because उनका budgeting उतना नहीं होता है. The hardware requirement is not very standard. It is not very higher. They can go with the low performing hardware and software requirements. Okay. Now one more difference. Okay, ये तो सब आपका same ही रहेगा इन दोनों में. So that is why I have not mentioned it here. One important difference is in DBMS, data redundancy is very common. So redundancy means what? Data का repeated होना, data का duplication नहीं बोल सकते. Duplication is a different thing. Repetitive मतलब बार बार joins
का क्रॉस जॉइनिंग काइंड ऑफ हो रहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनना. So here you can say why people in today's era they are not opting for DBMS when they have the budget of RDMS. One good reason is data redundancy. Again a very very familiar question when you go for interview कि आपने क्यों move किया DBMS से RDBS में. What important reason you think the people might have moved, the organizations are moving? Data redundancy. But when I talk about RDBMS, data redundancy is very less. I mean, I can also say in RDBMS, there is no space to allow data redundancy, and that is how. So अगर आपने इंटरव्यू में इतना ही बोला कि यहाँ पे redundancy बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे होता है. So again, you will have the counter question there कि क्यों नहीं होता है? What kind of a functions you have? Are there any settings the admin is doing, or are there any settings a developer is doing? So there is no setting. There are two concepts you can say. The concept is known as indexes. Okay, with the help of indexes and keys. तो keys तो हमने already देखा है, indexes हमने नहीं देखा because it is not required when you are learning Power BI. Okay, so indexes and key. So key you know, हम लोग key क्या है, हम बेसिकली कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं ना प्राइमरी की फॉरेन की. तो कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, आप वो टूल को उस टेबल को रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, कंपल्शन लगा रहे हो कि ये वाला कॉलम में प्राइमरी की ही होना चाहिए, इसमें नॉर्मल वैल्यूज होना ही नहीं चाहिए, ये फॉरेन की है, समथिंग लाइक दैट. सो यू आर पुटिंग अ कंस्ट्रेंट. बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट डेटा डुप्लीकेट, डेटा रिपीटेशन होने के चांसेस कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाते हैं. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट इंडेक्सेस, एक सिंपल एग्जांपल. सी एवरीबडी रीड्स बुक्स. आपने स्टडी किया है कहीं ना कहीं, एनी स्टेज ऑफ योर पार्ट ऑफ योर स्टडीज कहीं तो. सो सी एवरीबडी नोज हमारे फर्स्ट पेज में क्या होता है, बुक में कंटेक्स्ट होता है, इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे टॉपिक लिस्ट किए होते हैं. करेक्ट. सो सिमिलरली अगर आपने वो कॉन्टेक्स्ट देखा, सो इफ यू वांट टू गो टू द टॉपिक विच इज मे बी ऑपरेशंस इन सीक्वल, आपको ये टॉपिक सर्च करना है. सो इफ यू डू मैन्युअली इट इज गोइंग टू टेक यू लॉट ऑफ टाइम टू सर्च दैट पेज. बट इंडेक्स इज हेल्पिंग यू टू डू व्हाट, it is everything is listed in a very proper manner. You can select a particular topic and you can land to the respective page. Same thing SQL में भी वही concept है. Indexes are basically if you want to define something in a sequential manner, you have a concept of indexes. So when you combine index and keys together, or if you keep it separate also, it does not allow you to have a redundancy in the tables of the databases. So it is not related to one table. मल्टीपल टेबल पे आप लोग की और इंडेक्सेस के कंसेप्ट लगा सकते हो, एंड यू आर जस्ट इरेडिकेटिंग योर डेटा रिडंडेंसी वाला फैक्टर हियर. ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट DBMS, RDMS. Let me know if you have any questions here. Otherwise, we can move to the next part of the theory section. Okay, let me know if you have any questions. I'll just keep this frame open here. So where was the, okay, yeah, in the section 2. So I can just make it here as DBMS versus RD. Okay, so yes, this is what we wanted to cover for DBMS, RDMS. Now I think we are good to move with the practical session. So yes, Shweta, if you can just present your screen, I can just close my presentation. Yes, okay. Yeah. So for Suha, not Suha, sorry. So for Ruchika, Dolly, and Akshay, you'll have the setups with you? For SQL Server? No. Okay. Yes. You haven't? Okay. So Akshay, I have already uploaded one document on the LMS. Please go through it, and you should get the setup. Because then yesterday I did not, uploaded an assignment because there were new joiners today. I'll be uploading one more assignment, and you can get started with that. Okay. Okay. So yeah, this is what we have done yesterday. Now let's move and understand one more type of a join which we have. Can you move to that Excel, Shweta, please? So I'll just see what we have covered. Okay, so we have covered inner, then left, right, and outer. So what we can do is we can also cover one more type of a, not a join, but then basically it is like union and union all. So we can do this in Power BI also, but then okay, let's do it here. Okay, so let me request you for the control and then just accept the same.
Okay, I have the control. Thank you. So Ruchika, Suha, not Suhas, Ruchika and Akshay. So this is what we have covered in the yesterday's session, different types of joins. So we have created them. We have also got the results outside so that we can understand which join is giving you what type of result and how can you just differentiate this results when you are going for the interview section. Okay, now let's understand one important concept, union and union all. Okay, so what is union? It's again a normal English word. Union is basically when you're trying to merge something. Okay, when you're trying to merge two things together, or if I talk about more technically, if you want, let's say, if you want to union two tables together, so you have a concept known as union, and the other one is union all, both of them. Okay, so they are helping you to merge two or more tables together. Sorry, my bad. So it is helping you to merge two or more tables together. That is how this it helps you to get a resultant set, that is a third table. So this happens with your joins also. When you're merging two or more tables together, you'll always have a single resultant set. Same thing happens with your union also. Now coming to SQL, in SQL union is basically a operator. It will be acting as an operator. That is why I mentioned is not a join. It is one of the operator. There are many operators which we have in SQL. You can go and just look into it. It is simpler to understand because we have already covered the basics of SQL, and remaining operators ultimately we are going to cover when we work with Power BI. Okay, so again coming to the operator, that is your union and union all. So in SQL, the union operator selects rows from two or more table. So when you are selecting rows from two or more table, what happens? You get a third resultant set. So let's say if I create a sample table here, for example, okay, let me create a table, then I'll help you understand how this will work. So let's say I have an ID, then name, and for example, age. Okay, I could have worked, people, if you have question कि ये tables पे काम क्यों नहीं कर रहे, because when you're working with union and union all, the number of columns and the structure should be same. That is why I'm creating a new structure. Later on we can if we have time we can insert this. Okay, so let's say this is a table, and the name of the table, if you are defining it, is like, for example, teachers table. Okay, and we have, let's say, one more table, that is the students table. Okay, so under ID, let's say if I have the ID 1, then 2, and then if I'm adding, let's say like maybe some 4-5 IDs. Name is like, for example, Peter, then you have Lindo, then maybe Clevin. These are the name of my managers with whom I work. Clevin, and one is Harry, and then we have okay, Rosie. Okay, and let's say if I put some random age 32, then let's say 43, again a 43, 30, and let's say this is 50. Okay, so this is your table for teachers, and then you have one more table for students. So similarly, I will have ID. The way I said, the structure should be same. That is why I'm creating this table. So if I have the ID 1, 2, 3, and 4, let's say we have 5, and the names here are, okay, Harry is already there, so we cannot put Harry. Let's say if I have Jack here, then I have Joey here. Okay, then maybe Millie, and then we have, let's say, okay, any random name, and then we have here Denver, and their respective age, let's say 23, 42, 32, 23, and maybe 55. Okay, so these are two tables. One is your student and one is your teachers. Okay, I'm just giving them a color code.
Okay, so these are two tables which we have created. Now, what we need to derive from this table, okay? So in union, what happens if the rows of the tables are same? So see, I have the similar rows here. Similar rows and columns. So if the rows of the tables are same, these rows are only included once in the resultant set. So when I work with the operator that is union and union all, I will get a resultant set which will be having only one set of data. So let's say what I will do is, for example, in the SQL command, we want to get the data. So what is the scenario? So I'm just writing the scenario one here. So the scenario here in the SQL command, we want to return the age column. So age column from the teachers table, and okay, and from students table we want to ignore the duplicates. Ignore the duplicate rows. Add some. Okay, so ignoring the duplicate rows. So let me see whether I have the data which has some duplicates. So you have 32, 43, 43, 30. So here you have 23, 42, 32. Okay, works. Okay, so what is the scenario we have here? We want to return the age from the column teachers and the students table, ignoring the duplicate rows there. So how do we do this? What will be the syntax? So I'm just writing the syntax here, and then maybe we can see it practically. Okay, so the simple syntax, so you can see the simple query which we require when we are working with the union operator is select. Okay, let me just go back to the SQL and let's go at the start maybe. Okay, so the statement would be, the first requirement is the structure should be same. So we have the same structure. So here if I'm adding age, so from where do we want to get the age? We want to get the age from the teachers table. So teachers table on what basis? With the basis of your union operator. So this is how you write the syntax. Again, selecting age from your students. Okay, so this is how your union will take the place. See, the union is not giving me any error because it is again a predefined operator in all of your databases tool. So if you want to combine these two tables together based on their structure, you can do union. Similarly, if you want to work with union all also, the syntax will just change here. Just the operator will have a suffix of union all. Okay, similarly you can work with it. So union all operator again selects the rows from two or more table, similarly from your teachers table, from your students table, and it will ignore the duplicate rows. So union all, they almost work the same in unlike in union all, it does not ignore the duplicate rows, but in union what it will happen is it will take up your what we say the duplicate rows. Okay, so let's say we have this kind of a syntax here, and if you want to get the result here, so moving back to your statements, so I'm just copy pasting that statement here. Let's say for, okay, I'm just pasting it here. Okay, it is not getting pasted. 1 second. Shweta, can you try pasting? I don't know, Control V is not working for me. Just do a Control V. Okay. No, keep it in the same bracket. Do a Control Z. Just make a Control Z, yeah. Okay, so the same syntax will be there for your
Okay, now it's working. Did you do a wrap text? Just make it here union and just remove the alt from here and give a space here. Huh. Okay, so until she make these changes, so things we need to keep in mind when we are working with union is the column count in all the tables must be same. So in both the tables we have the same column count, that is 3. ID, then the name of the teacher and the age. Similarly, in the student table we have the same thing. So the first criteria is the column count in all the tables must be same. That is with respect to your teachers and students. Both the tables have 3 columns. Second criteria, if the columns are same, the data types of column must also be same. That is very important when you're working with union all. Okay. So first is the total count of the column should be same. Second is the data type should also be same for the columns. For example, the age column in teachers is an integer. Similarly, the age column in student is also an integer. सो फर्स्ट थिंग इज आपका जो कॉलम का काउंट है दोनों टेबल्स में जहां पे आप यूनियन और लगा रहे हो वो सेम होना चाहिए. सेकेंड इज आप जिस कॉलम्स को आप यूज कर रहे हो दोनों टेबल्स में उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल एज ऑफ टीचर्स एंड एज ऑफ स्टूडेंट दोनों का डेटा टाइप इंटीजर ही है. दिस इज सेकंड क्राइटेरिया. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज द कॉलम मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर. आपका ये जो ऑर्डर है आपने देखा होगा मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बनाया है, सिर्फ मैंने डेटा डिफरेंट डाला है. So the column must be in the same order in each table. For example, the orders in column, जैसे भी जो order है ID, name and age should be exactly similar to ID, name and age in the other table. तभी आपका union और union all work करेगा. This concept remains same to all the database tool. This concept again remains same to all the visualization tools also. और syntax is very simple. आपको दोनों को जैसे आप kind of merging कर रहे हो, union करोगे और union all करेंगे. So this two will give you the resultant set. I just write the resultant set here for union. So union का resultant set you can do it practically later. तो अभी ये एज का कॉलम आपका आ जाएगा. तो जैसे मैंने बोला कि दोनों भी क्या करेंगे आपके डुप्लीकेट्स इग्नोर नहीं करेंगे. सो यू विल हैव द एंटायर डेटा हियर 43, देन यू हैव 43, 30, then you have 50 and same thing will apply for this also. Again I have a problem with copy pasting. Wait, let me see. Okay, I'm able to copy paste. So this is how you will get the resultant set for union. And if you go for your union and union all, same thing. Okay, so this is how I don't know ये copy pasting में कुछ issue हो रहा है. श्वेता copy करो एक बार paste करो. हाँ I don't know मेरे साइड में वो V चल रहा है कि नहीं पता नहीं. ओके ठीक है अभी चल रहा है शायद. 1 second. No, this key is not working. One second ना मेरा system is stuck. Wait. Okay, वो टैब पे stuck हो रहा है. ओके तो नहीं यहाँ पे ज्यादा कॉपी. ये यूनियन ऑल हो गया. यूनियन ऑल में आपका क्या हो गया इट रिटर्न्स द डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर द रिजल्टेंट सेट. और यूनियन में क्या हो गया इट रिटर्न्स द डिस्टिंक्ट वैल्यूज. तो ये यहाँ पे
जो भी numbers होगा उसका वो distinct दिखाएगा, ठीक है. So this is how you combine both of them together. Now again the interview question, which one will be using and why? So आप इसका बोल सकते हो comparison, union all is slower in union is slower in comparison to union all. So this is little slower as compared to the union all, and union all executes faster as compared to the union. ये दो differences है, because वो क्या करता है, वो duplicates भी आपके साथ में लेके आ रहा है. So ultimately यही उसका reason है कि वो faster क्यों है. It executes faster as there is no need to filter the data sets by removing the duplicates. That is why it is faster. So faster has a reason, no need to remove your duplicates. That is why it is faster. So depending on your requirement, you can start using any one of them. But then अगर आपके पास में ऐसा है कि आपको duplicates भी carry forward करने हैं, so you will be going with the union all. Okay, so this is about union. Now what do we have, the next concept? So what you can do is, just because we are little short of time, you can take the same table जो हमने Excel में बनाया है, आप ये same table को insert करके you can just work on that concept. So it's a very small concept, just inserting this data and then just putting a union all, and you can see the resultant set. So for union, you'll have a distinct set of resultant set, and for union all, you'll have what you say, even the duplicates will be carry forward. Now, did we see group by yesterday? हम लोगों ने cover किया था क्या? I'm not sure इस batch के लिए था या कहाँ था. Did we cover group by? Let me just check. Okay, we have done order by, so group by is not done. Okay, so let's go and understand what a group by would be doing. So yes. Okay, so a group by is a type of a clause. Okay, similarly like order by, we also have a clause that is your group by. So group by is used to group the rows by one or more columns. Okay, group by क्या कर रहा है? It is helping you to group the rows. तो क्या करेगा? Rows को group करेगा with the help of one or more column. So let's see the syntax and then we can move forward. Okay, so maybe I'll write the little bit of theoretical part here and then we can go to the actual hands-on scenario. So I'm just writing it here, group by. Okay, we already have data for null and blind. So group by, so what is group by basically? So it is a clause. Okay, now group by is a clause. It is used to group. It is used to group rows. This is very important. Used to group rows by one or more columns. तो क्या कर रहा है? आपके rows को group कर रहा है with the help of one or more columns. We'll see an example of this. Now, one important note here. With the help of the group by clause, it is used in conjunction with your aggregation functions. तो आपको जब group by use करना है, you have to use your aggregation functions. So the question is, what is aggregation function? Minimum, ये आपका aggregation function है. You have your maximum. This everybody have done. I mean, when we are using Excel, minimum, maximum. In our mathematics also we have used these functions. So these functions are nothing but they are known as your aggregation functions. And when you're working with the group by clause, it is one of the method that you use your group by and your aggregation functions together. So if I keep on writing few other aggregation functions, you have sum, then you have average, and then the count. So all these are important, and the list is like much more than this. I'm just listing few of them. So when you're working in a select statement, when you're grouping the rows by some particular column, let's say the column is country, and if you want to count each of the country, तो उस condition में आप क्या करोगे? आप count का help लोगे. So that is why it is mentioned when you're working up with the group by clause, you use aggregation functions together. Okay, so let's go and see the example. And before seeing an example, let me just write the syntax here. Okay, so select, it can be any one of your column name.
select column name, then here you need to put your aggregation function. So aggr function, I'm writing it here. Okay, and then from which table? So it will be followed from the table, whichever table, and then you have the group by condition. So now on what condition you want to group by? So now let's go and convert this into a actual scenario. Very basic syntax. So yeah, let's come here. So this is the syntax I'm keeping. So what is the syntax? You need to first select something, because group by क्या कर रहा है? Group by एक ऐसा clause है जो आपको group कर रहा है rows को on the basis of your column. So let's say we can group, maybe let's understand the data which we have. So where are the two select statements? These two select statements, we will just execute them. अच्छा, ये आपके इसमें भी ऐसे ही हो रहा है क्या श्वेता? Invalid object, it is there ना, कुछ delete नहीं हुआ ना? It is there only. Okay, let's see one of them maybe. Object is invalid. सेम चीज वही हो रहा है आपके इसमें भी, ऑब्जेक्ट इनवैलिड दिखा रहा है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी? किसी के लिए चल रहा है क्या? एनीबॉडी एल्स? यू हैव द वर्किंग डेटाबेस? दूसरा फाइल ओपन करके देखती हूँ एक मिनट। मैम ऊपर डेटाबेस सिलेक्ट करो ना, टेस्ट डेटाबेस को। टेस्ट डेटाबेस? हाँ, उसके बाद वो एम्प्लॉय डिटेल का टेबल एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। अच्छा, वैसे बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, शी इज डूइंग समथिंग। स्पेलिंग डबल एम आ गया। नहीं, डिटेल्स करके है क्या? दिखा नहीं रहा है ना, देख लो एक बार। पार्टी है ना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दिखा रहा है। जायचं आहे। टेबल्स का इशू है शायद, डेटाबेस तो दिख रहा है बट अंडर टेबल का प्रॉब्लम। वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करो उसको, एम्प्लॉय डिटेल्स को एक बार ड्रैग करो, या फिर ठीक है ड्रैग करो, या फिर नीचे से ले लो। वो ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड, ऑब्जेक्ट फाइंड ही नहीं कर रहा। उसका स्ट्रक्चर ओपन करो, डिस्क्राइब करो उसको, ऐसे कमांड लिखो, एक सेकंड ना, लिखो ये, डिलीट करो, कंट्रोल ए एंड डिलीट। हाँ ऐसे लिखो, DESC डिस्क्राइब, DESC और आगे लिखो एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय डिटेल, वही कॉपी पेस्ट करो ऊपर का। हाँ ठीक है, वो डिस्क्राइब भी नहीं करेगा क्योंकि वो टेबल ही फाइंड नहीं कर रहा है। डिस्क्राइब में क्या होता है, आपको पूरा टेबल का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो टेबल ही नहीं फाइंड आउट कर रहा है तो वो वर्क ही नहीं होगा। सुहास आपके पास चल रहा है क्या? मैम टेबल में अगर राइट क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करते शायद हो जाएगा। हाँ वैसे तो दिख रहा है वो, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करके देखिए। ठीक है, 1000 रोज तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, अभी इसको फिर डिस्क्राइब करो मयूरी, सॉरी श्वेता। अच्छा, वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा है तो ठीक है, टाइमिंग। अच्छा, फर्स्ट रोज पे शी सिंग, फर्स्ट रोज पे काम करना, ठीक है ओके। ठीक है, अभी को इसको छोड़ो, फिर डिस्क्राइब को मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख के देखती हूँ, दिस इज वर्किंग। ओके, so the syntax is group by, for example, city ID,
Okay, and if you want to count star, let me write the syntax, then I'll explain you. Count star from your employee details. Okay, and group by city ID. Okay, so see, this is how your group by is working. So basically मैंने क्या किया है, मैंने एक column दिया है, and what I'm saying, what command I'm giving to this particular in this particular syntax is I want to group the data. First thing I want to get the data in the resultant set for the city ID, and count star means it is getting you the count of the डेटा रो वाइज, तो वो इतनी बार दिखा रहा है कि 101 आईडी कितनी बार प्रेजेंट है उस टेबल के अंदर. सो आई वांट टू गेट द काउंट, और उसका एज एवरीबॉडी नोज एलाइसिस है, तो मैंने एक नया नाम दिया है उसको, दैट इज अ नंबर. यू कैन गिव एनीथिंग, काउंट ऑफ सिटी आईडी भी आप दे सकते हो. तो एज सो काउंट स्टार इज गोइंग टू वर्क ऑन अ रो लेवल. तो उसमें सिटी आईडी का जो आईडी है कितनी बार मेंटेन है, कितनी बार अवेलेबल है, इट इज गिविंग यू द काउंट. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल्स. और मैंने कैसे ग्रुप किया है, ऑन व्हाट बेसिस आई वांट टू सी this particular information, on the basis of city ID. So this is how you have the data here. So let's say if we do it by अच्छा और कोई data नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है. सिमिलरली वी कैन डू विद द सेकंड टेबल आल्सो. सिटीज डिटेल के साथ में भी यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो मे बी ओके, सेम कंडीशन. I'll just go, I'll copy this syntax here and just make it a okay, control Z. Okay, so we can make it on city name. The city name के साथ city details. And then you want to group it again on your city name. So I'm selecting this and executing. So similarly, आपको दिखा रहा है वो in the entire table structure for how many occurrences you have your individual city name. तो चेन्नई का occurrence एक ही बार है, मुंबई का is also one, पुणे का is also one. So this is how group by will work in conjunction with your aggregation function. So you can have count, you can have sum, you can have average. Okay. So when you have a larger data sets, आप इस aggregation level को change कर सकते हो. ठीक है. सो सम में क्या करेगा, उसका एडिशन दिखाएगा, एवरेज करेगा उसका. सो आपको सम में फिर यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा. यू वांट टू एग्रीगेट ऑन व्हाट बेसिस. जो अगर आपके पास सपोज समथिंग इज रिलेटेड टू सैलरी, करंटली वी डू नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हियर. ओके, सो अगर आपके पास में सपोज स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, तो अगर आपको देखना है कि टोटल सैलरी कितना है हर किसी का फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, सो यू कैन स्टार्ट पुटिंग दोज वैल्यू अंडर योर एग्रीगेशन फंक्शन. एग्रीगेशन के साथ में एक और क्लॉज चलता है, दैट इज योर हैविंग क्लॉज. ओके, सो हैविंग में ऐसा होता है कि यू ट्राई टू गिव द रेंज बिटवीन योर न्यूमेरिकल पैरामीटर्स. ठीक है, तो ये एक बेसिक सिंटैक्स हो गया आपका ग्रुप बाय का. ओके, देन लेट मी सी, हमारे पास अमाउंट भी नहीं है ना. अगर अमाउंट या कुछ होता तो वी कुड हैव पुट अमाउंट हियर, कस्टमर आईडी अमाउंट. ओके, लेट्स गो टू दिस. ठीक है, तो एक और सिंटैक्स इसमें ऐसे बन सकता है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव कस्टमर टेबल है हमारे पास में, सो वी कैन हैव हियर कस्टमर आईडी. Okay, and now if you want to understand what is the amount generated by each of the customers, so I can give this customer amount as total. I want this column as total, and if this data is coming from orders table, okay, we have a orders table but we don't have amount, I think. Okay, and then you can group by based on the
कस्टमर आईडी। तो ग्रुप बाय आप कभी भी एग्रीगेशन डेटा पे नहीं करोगे। द वैल्यू विच इज देयर इनटू एग्रीगेशन दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप बाय। द वैल्यू विच यू आर सिलेक्टिंग, आप वहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हो। देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि आपने एक ही कॉलम देना चाहिए। यू कैन कीप ऑन एडिंग योर कॉलम अंडर योर सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड दे विल बी हाईलाइटेड इनटू योर रिजल्टेंट सेट। ओके, बट आप ग्रुप बाय में भी सेम कंडीशन, यू कैन ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कंडीशन, बट देन इट इज यूजुअली प्रेफर्ड कि आप जितना हो सके 2 लेवल से ज्यादा ग्रुप बाय ना करो, बिकॉज डेटा का फिर ग्रैन्युलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। So for analysis, we keep on doing these kind of queries. We keep passing to the databases and then we retrieve the data just for matching purpose. जो report पे दिख रहा है exactly, do we have that level of data in the databases? So that is one thing. So this is here. जैसे अभी आपको customer ID और customer name fetch करना है, और वो customer ID and name के related if you want to get the total amount और total sales जो आपका generate हो रहा है every customer के लिए. So this is how you can start writing your group by, and then you can club that group by with your aggregation. So these aggregation functions can keep on changing. Sum है, count है, total है. So based on the need, you can just change it. But अभी ये compulsion है कि जब आपने group by जब आपने aggregation function use किया है, आपको group by use करना ही है. But ये reverse ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ ग्रुप बाय यूज किया, एग्रीगेशन आपने लीव किया, इन सम केसेस इट इज ओके, बट व्हेनेवर यू हैव एग्रीगेशन फंक्शन यू टेंड टू हैव योर डेटा रेडी फॉर योर ग्रुप बाय। नाउ योर ग्रुप बाय यू कैन आल्सो मेक इट वर्क विथ योर जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स के साथ में भी चलते हैं ग्रुप बाय। सो कैन यू गो बैक श्वेता वो वाला सेक्शन पे जहाँ पे हम लोगों ने जॉइंट्स लगाए थे, वो टैब क्लोज हो गया क्या? I can see only 2 tabs here. Take the control. हाँ वो क्लोज किया क्लोज मैंने। हो गया क्या? अच्छा, तो हमारे पर आपके पास ऑलरेडी वो जो ज्वाइन के कंडीशंस है ना, उसमें भी अच्छा ये ओके ओके क्लोज दिस। हाँ, उसमें भी सेम फंडा है। इन द ज्वाइन कंडीशंस आल्सो आपको फिर सिलेक्ट में सिर्फ एक एग्रीगेशन डालना है। फॉर एग्जांपल अगेन ऑर्डर आईडी का आपने काउंट डाल दिया है, उस कॉलम को आपने नाम दे दिया है एज ऑर्डर काउंट, और उसको आपने ग्रुप बाय कर दिया कस्टमर आईडी पे। सो यू कैन कंबाइन योर ग्रुप बाय विथ योर जॉइंट्स आल्सो। ठीक है, सो दैट मीन्स यू कैन हैव ग्रुप बाय विथ मल्टीपल कॉलम्स, यू कैन हैव ग्रुप बाय विथ मिनिमम one column also. One more example I'll give you here for group by. For example, if you want again select country, then let's say if I have state, I'm just giving you कि आप maximum columns भी कैसे लिख सकते हो. Now if I want to have let's say minimum of age, and age जैसे मैंने ये column दे दिया minimum of age, ठीक है, and if this is coming from let's say the table students, ये data आ रहा है आपका, okay, from students, and then you are doing a group by, one second, and then you can do group by on multiple factors here. country भी कर दिया आपने, state भी कर दिया, तो क्या होगा आपको मिनिमम एज मिल जाएगा स्टूडेंट का ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप बाय। तो आपके पास में 3 कॉलम रेडी होंगे, एक होगा कंट्री का, एक होगा स्टेट का, और थर्ड होगा एज का। तो हर किसी का आपको एज का उसमें कॉलम दिखते जाएगा, एंड द नेम ऑफ द कॉलम वुड बी मिनिमम ऑफ एज। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप चेंजिंग द एग्रीगेशन लेवल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन स्टार्ट हैविंग योर आउटपुट। नाउ अभी हैविंग वाला जो एक क्लॉज है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है व्हेन वी आर वर्किंग विद पावर बीआई, इट वर्क्स विदाउट हैविंग, but just as an extra scenario I'm just putting it here. So okay, let me just go here. Okay, क्या open हो गया सारा? Go to your Excel. Wait, I have the Excel I think. ठीक है, so other than group by you have one more clause that is your having clause. Okay, so having basically क्या करता है, मैं यहाँ पे short में दिखाती हूँ. So when we are using a group by clause with the having clause, it is used to filter. तो having clause का meaning इतना ही है, it will help you to filter the data. Okay, और having clause mainly it deals with the numerical constraints, or you can say numerical columns and
values. Okay, so it is not the compulsion कि आपने group by use किया है तो आपको having use करना ही है, because हमने अभी syntax में देखा है group by can work alone, group by can work with join conditions, group by can also work with your aggregation conditions. ठीक है. Now if you want to increase the level of group by, you can combine group by with having clause also. So when we use the group by clause with the having clause, the reason is you want to filter the resultant set based on the aggregation. तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो आप ग्रुप बाय के साथ में आपका हैविंग क्लॉज लगाओगे. सो इसका एग्जीक्यूट होने का पैटर्न भी ऐसे ही है. सो इफ नॉट दिस एग्जांपल जहां हमारे पास में कस्टमर आईडी है. ओके, सो ठीक है, एंड हियर आई कैन हैव माय हैविंग. सो यूजुअली इंटरव्यूज में ये सीक्वेंस पूछते हैं कि आपका डेटा कैसे ऑर्डर में अरेंज होता है. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ योर SQL स्टेटमेंट्स. So let's say if I am having the customer ID, तो मैंने for example customer ID का count लगा दिया. So I want to have a count of customer ID and let's say customer name भी मुझे निकालना है, and one more thing I have is country. So I want these tables coming from my, these columns if I am getting it from my customer table. Okay, उसके ऊपर हमने group by लगा दिया for example कंट्री पे. जैसे मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया था कि आप ग्रुप बाय एग्रीगेशन वाले कॉलम पे नहीं लगाओगे, ग्रुप बाय किस पे लगाओगे, विच इज अदर देन योर एग्रीगेशन कॉलम्स. ओके, सो व्हाट आई वांट टू गेट इज आई वांट टू गेट द कस्टमर नेम, आई वांट टू गेट द कंट्री, एंड बेस्ड ऑन दैट आई वांट टू काउंट द कस्टमर आईडी देन फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल फॉर एग्जांपल. तो मैंने ग्रुप बाय किस पे किया, आई कैन डू ऑन कंट्री, आई कैन डू ऑन कस्टमर नेम, यू कैन ऑल्सो डू ऑन बोथ ऑफ देम, कस्टमर नेम भी और कंट्री भी. अब इसमें हैविंग का क्या रोल है. हैविंग का रोल जैसे मैंने बोला वो आपको मेनली आपके न्यूमेरिकल डेटा के साथ में काम करेगा. सो आई एम टेकिंग अ काउंट हियर एंड यू कैन मेक द वैल्यू दैट इज योर कस्टमर आईडी काउंट which is greater than, for example अभी मेरे पास में IDs क्या रहेगी, IDs will be in the range of 1 to 100, 1 to 20 something like that. तो आप यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो. अगेन दिस इज ये कर्सर को यहाँ पे लेके आओ एक बार श्वेता, यहाँ पे प्रीवियस लाइन पे. So with having you're just putting the aggregation functions. नहीं वो जा ही नहीं रहा है शायद पीछे. ठीक है, तो ठीक है, anyway I'll carry forward it here. तो with aggregation functions you can, नहीं it is not working ना for me. आपके लिए भी नहीं कर रहा है क्या वो? Okay, the screen is gone. मेरे नेट का कुछ इश्यू हो गया था आई गेस. ओह ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा तो ठीक है, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. ओके, सो मैंने क्या लिखा था, आई थिंक सिलेक्ट ऑफ वी हैड कंट्री and we were doing a count of I think customer ID पे कुछ count था, and we were getting this data from the customers table. Okay, and then we were putting there a group by. So group by हमारा country पे जाएगा because it is a non-aggregated value, and then we are using a having here. Okay, so having count of, let's say I want to count on my कस्टमर आईडी. तो अभी कस्टमर आईडी का मैं जस्ट दिखा रही हूँ आपको कि रेंज कैसे देना है. अभी मेरे पास कस्टमर आईडी लेट्स से 1 to 100 तक है. सो यू आर कमांडिंग योर SQL सर्वर कि आपको वो ही कस्टमर आईडी चाहिए विच इज मोर देन मे बी विच इज अबाउट 2, अबाउट 12 टू वट एवर इट इज, जो भी आपके पास में रेंज है. तो आप सेट कर रहे हो, पहले के 20 ना दिखाओ, बाद में के दिखाओ. सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग योर ऑपरेशन लेवल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. सो दिस इज हाउ योर ग्रुप बाय एंड हैविंग विल वर्क together. So there is no necessity कि आपको having लगाना है. Your work will happen with the help of group by. But अगर आपको आपके डेटा में if you want to filter the data basically, जैसे ये क्या कर रहा है, where जैसे ही काम कर रहा है ये, if you want to filter out the data based on your aggregation function, so having के साथ में हमेशा आपका aggregation function रहेगा ही रहेगा. तो आपने एक एग्रीगेशन यहाँ पे लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सैलरी है किसी का, तो आपने क्या किया, उसी एग्रीगेशन को आप यहाँ पे लेके आ रहे हो. ये आपका सैलरी है और आपने सैलरी में मेंशन कर दिया कि जिन लोगों का सैलरी में भी 3 लाख के ऊपर है, समथिंग लाइक दैट, वो ही लोगों का कंट्री और उन्हीं लोगों का कस्टमर आईडी मुझे रिफ्लेक्ट करो. सो इफ आई एम एडिंग योर कस्टमर आईडी,
So what will happen is, based on this country customer ID और जिसका काउंट इस रेंज में है, इस रेंज से ज्यादा है, we will have the data. तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा? You will have country, you will have customer ID and the count of salary for every individual. So this is completely not necessary, but if you want to filter the data in your particular resultant set, then you will be using your having clause based on your aggregation. So ये दोनों हमेशा hand in hand जाएंगे. जब तक ये कंडीशन आपके पास में नहीं है, you won't be able to use your having clause. अब इसका सीक्वेंस कैसा होता है? Select होता है, from होता है, then you have group by. After group by, you have having condition. Okay, so this is how the order is when you're trying to write the queries. Okay, so I think that is what we had for today, and that is what overall your SQL concepts also which is needed for Power BI. And हाँ, एक दो चीजें और है, I mean only one thing. तो एक लिमिट करके होता है, and then you have the top, limit and top. So limit, as the name says limit, what happens basically, जैसे अभी I think रुचिका ने, हाँ बोलो। ये थोड़े से लेटर कॉन्सेप्ट्स आप मंडे को समझा सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है आपको? हाँ ठीक है, हाँ। चलेगा। There are only two things, ये दो ही चीजें हैं, then we can pick it up on Monday. Okay, because actually Power BI start करना था, I'm getting it from Radical, because अभी SQL नहीं था हमारे इसमें, so that was why we want to start from Monday. ठीक है, no problem. ये दो हम लोग Monday को लिमिट और टॉप लेके then we'll go to Power BI from Monday. Okay. ओके। So मैं क्या करूंगी, I'll also upload one document to get the installation for Power BI. Hardly 5 minutes का ही है इंस्टॉलेशन। स्टिल अगर वो नहीं हो रहा है, मुझे इमीडिएटली उसी में कमेंट करके बताना। आपके एक तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो, या फिर आई थिंक यू ऑल्सो हैव ऑप्शन इन द LMS ऑल्सो, तो आई कीप गेटिंग नोटिफिकेशन लाइक somebody have commented. तो एटलीस्ट गेट द सेटअप रेडी फॉर Power BI, so we can do hands on Power BI. मंडे को नहीं लगेगा Power BI, but then it is good to have. So from Tuesday you can start doing basic assignments. ठीक है? Okay, हाँ, and Ruchika, Akshay, Dolly, you'll just wait for 5 minutes and others can drop off. ओके, थैंक यू। Yeah, okay, thank you. Yeah, just unmute yourself. मैम Yes. हाँ सलोनी बोलो। मैम कोई और सर्वर यूज नहीं कर सकते हम लोग, जैसे कि टॉमकैट है, जैम्प है? अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम? मैंने आपको कल लिंक भेजा ना, उससे भी नहीं हुआ वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट? नहीं मैम, मे बी कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है वो, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने आपको जो लास्ट चीज भेजा था ना, उसके साथ में तो वो इंस्टॉलेशन हो ही जाना चाहिए। तो अभी यही कंस्ट्रेंट है, आपका वो ब्लॉक ही दिखा रहा है। तो ठीक है, आप फिर चेंज कर दो उसके मोड को एंड देन कंप्लीट। चेंज कर दूंगी मैम। अगर नहीं चला तो फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा है मैंने 2-3, उस पर ट्राई करूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। देखो अल्टीमेटली हमारा सीक्वल तो गोल है ही नहीं। अगर आपको आपका नहीं हुआ सेटअप तो इट इज ओके, बिकॉज एनीवे व्हेन वी गो टू पावर BI हम लोग एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, PDF इन सब से कनेक्ट करने वाले। सो इफ इट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, डोंट स्ट्रेस, बट देन इट इज गुड टू हैव सीक्वल्स और आपके सिस्टम में होना चाहिए। सो जस्ट मेक श्योर कि वो किससे कंपैटिबल है एंड देन गेट द सेटअप कंप्लीट, है ना। सो फॉर टाइम बीइंग यू कैन वर्क, बट आई थिंक अल्टीमेटली कुछ हफ्तों के बाद में विल मूव एंड कनेक्ट योर पावर BI एंड SQL सर्वर टुगेदर। तब तो आपको लगेगा ही फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, है ना। ओके, ठीक है, लेट मी नो वंस यू गेट द सेटअप कंप्लीशन, या इफ यू नीड एनी हेल्प फिर मुझे बताना, मैं आपको फिर रेफर कर या मैम, श्योर, है ना। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सो अक्षय, डॉली, रुचिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो फॉर डॉली आई नो शी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ SQL। रुचिका, आपको भी बैकग्राउंड है SQL का, राइट? हाँ, एंड फॉर अक्षय यू आल्सो हैव अ बैकग्राउंड, तीनों को है। हाँ, यस मैम। करेक्ट। तो अभी फिर जैसे मैंने अभी देखा, मैंने बहुत ही बेसिक कवर किया, बिकॉज ये जो बाकी के 3-4 लोग हैं उनको डेटाबेसेस पता ही नहीं कुछ भी। दे आर आई मीन कपल ऑफ देम आर वर्किंग, कपल ऑफ देम आर लाइक डोमेन फाइनेंस है, और जो सलोनी है शी इज जस्ट अ फ्रेशर। सो फॉर देम आई एम कवरिंग। सो व्हाट आई वाज डिसाइडिंग, अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिस नहीं है SQL का, डेटाबेसेस का, सो वी कैन हैव अ सेशन 1 घंटे का, आज 1-1.5 घंटे का, आई कैन कवर अप जो भी 4-5 दिन में हुआ है।
बट इफ यू थिंक कि नहीं चाहिए, लेट मी नो, यू कैन गो बैक टू वीडियोस. बट इफ यू वांट मी टू टेक अप, तो मैं वापस आज, या आई थिंक टुडे ओनली द मोस्ट प्रेफरेबल डे, बिकॉज टुमारो अगेन आई विल बी पैक्ड विद अनदर सेशंस, वीकेंड है इसलिए. सो आफ्टरनून में है क्या अवेलेबिलिटी, या किसी का ऑफिस है? मुझे तो ऑफिस में ऑफिस है. तो डॉली, रुचिका क्या करना है? डू यू वांट अ सेशन, एक ब्रीफ सेशन लेना है, और यू आर ओके टू गो अहेड विद पावर बीआई? सेम विद यू अक्षय, व्हाट इज योर टेक? I am okay to go ahead. Who is Dolly? रुचिका, व्हाट अबाउट यू? Yes, yes. चलेगा ना? हाँ, फिर अक्षय, आपको सेशंस चाहिए डेटाबेसेस के, या ओके? नहीं मैं कवर कर लूंगा वीडियोस पे से, कोई दिक्कत नहीं. नहीं, वीडियोस में आई थिंक ना एक दिन तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो नहीं रहा था. सेकेंड डे आई थिंक था कि रेडिकल का लिंक ही लेट मिला. तो अगर चाहिए टाइम, ओके, हम लोग कर सकते हैं. आई मीन बिकॉज वो ऐसे कि 4 घंटे के वीडियो के लिए हैव टू स्पेंड 4 आवर्स, तो जस्ट आई थॉट कि वो 1 घंटे में कवर हो सकता है. सो स्टिल ओके. और डॉली, रुचिका, ठीक है, वी कैन स्किप फॉर यू. अक्षय, स्टिल इफ यू फेस एनी इश्यूज, लेट मी नो. ठीक है मैम, पूछ लूंगा. कवर अप. If you are taking, then I am also to join. रुचिका क्या? हाँ, आई एम ओके टू टेक. एक क्विक क्या करेंगे ना, एक ग्रुप डिस्कशन, ऐसा आपको पता है तो इतना तो मेहनत ना आपको लगेगा, मुझे लगेगा. एक नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन करके हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सीक्वल क्या है, डेटाबेसेस क्या, जस्ट एक ब्रश अप हो जाएगा सबको, और कुछ नहीं है. हाँ, है ना? it is okay, ma'am. ठीक है ना, फिर कर लेते हैं. तो अक्षय, व्हाट टाइम यू अवेलेबल? मेरा एक्चुअली 9 से 2 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, वो मेरा कल कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे पाई सेशन को. एंड देन आई एम अवेलेबल टुडे एटलीस्ट. सो व्हाट टाइम यू विल बी अवेलेबल इन दिस डे टुडे? मैम 12 से 1:30 बजे तक तो मीटिंग है आज, एक शेड्यूल. उसके बाद कभी हो सकता है. अच्छा, उसके बाद क्या? सो यू हैव ऑफिस ना, अभी वर्क फ्रॉम होम है क्या? नहीं ऑफिस है, लोकेशन में चेन्नई में. अच्छा, यू आर देयर क्या? या तो ठीक है, मैं एक बार मेरा कैलेंडर देखती हूँ, बिकॉज मेरे 2 इंटरव्यूज है आज कॉर्पोरेट के. वो होने के बाद एक सेकेंड हाफ में लेते हैं, आई थिंक एक 3 बजे तक आई शुड बी फ्री. ठीक है. सो रुचिका, यू आर फ्री ना, अवेलेबल होल डे. डॉली, आपका भी अवेलेबिलिटी है? Yes. है ना? तो ठीक है, एक मुझे बस मेरा कैलेंडर चेक करने दो, मैं आपको एक आधी घंटे में बताती हूँ कि व्हाट टाइम वी कैन कनेक्ट फॉर एन आवर. ओके, सो लेट्स मेक इट एक इंटरैक्टिव सेशन लेके वी कैन लाइक जस्ट कंप्लीट इट, ताकि फिर आपको वीडियोस के पास जाना ना पड़े. ओके, ठीक है. और मैम सीक्वल कौन सा इंस्टॉल करना था? अच्छा, एक जन. हाँ, बोलो अक्षय, बोलो. सीक्वल कौन सा इंस्टॉल करना था? 2019 करो ना, वही चलता है ऑफिसेस में, वही बेटर है. ओके ओके ठीक है. हाँ, ओके, कोई ओके. हाँ, और मैम वो असाइनमेंट जो है तो हाँ, वो डॉली. सबमिट एक्सेल पे करना पड़ता है क्या? नहीं, अभी क्या करो ना, एक देखो, तुमने क्वेरी एग्जीक्यूट किए होंगे, है ना? वो उसका बस स्क्रीनशॉट लेके एक डॉक्यूमेंट में डाल दो, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में. जैसे देखो, अच्छा, प्रेजेंट. ओके. एक्चुअली मेरा भी सीक्वल का थोड़ा इश्यू हो रहा है, 2-4 दिन हो गए, बिकॉज उसमें डेटा ज्यादा हो गया है और वो SSMS वाला पैटर्न नहीं चल रहा है. सो सी वेट, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सेंड करना है असाइनमेंट. ओके, लेट मी प्रेजेंट इट. दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम. देखो, तो जैसे देखो डॉली, जैसे अभी आपने ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए ना, ठीक है, तो आपके पास में जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, नीचे रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे आपको. ठीक है. तो बस इसी का 1 टाइम स्क्रीनशॉट लेके उसमें पेस्ट कर दो एक नोटपैड में, एंड देन सेंड इट टू मी. ओके मैम. ठीक है, चलेगा. तो मैंने तो अभी बेसिक असाइनमेंट ही दिया है, आज मैं थोड़े जॉइंट्स के उसमें क्वेश्चंस डाल के अपलोड करती हूँ. ओके. हाँ, ठीक है. एनीथिंग एल्स यू हैव क्वेश्चंस है? यस मैम, एक्चुअली जो अपना पहला सेशन हो गया होगा, इसमें आपने एक्सप्लेन किया होगा कि लाइक आप क्या क्या कवर करोगे, तो मुझे उसके रिगार्डिंग सिर्फ एक पूछना था कि लाइक डैक्स में कितना कवर करेंगे करके, बिकॉज हाँ. अभी देखो डैक्स, इफ यू नो, देखो एवरी मंथ नए वर्जन आते हैं पावर बीआई के, तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी अपडेट होता है, कुछ ना कुछ जो फंक्शनलिटी इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, उसको और मॉडिफाई करते हैं. सो वी हैव ऑलमोस्ट 280 to 300 डैक्स फंक्शंस. ठीक है. सो दैट उतना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कवर करने का. सो व्हाट आई डू इज लुकिंग एट द ग्रास्पिंग पावर ऑफ द कैंडिडेट्स, बिकॉज आई गो फॉर कॉर्पोरेट, आई गो फॉर लाइक इंस्टीट्यूट वाले ट्रेनिंग्स भी जो होते हैं.
सो यूजुअली व्हाट आई डू, जैसे भी आपको डैक्स पता है, जैसे एक सम है, सो सम कवर होगा तो सम के साथ में सम एक्स भी हो जाएगा, काउंट कवर होगा तो काउंट के साथ में काउंट ए, काउंट ए एक्स, काउंट ए ये कवर हो जाएगा. सो आई वुड बी कवरिंग अप जो मेनली आपको रेगुलरली ऑफिस में लाइव प्रोजेक्ट पे लगते हैं. इफ आई टेल यू फ्रैंकली ना, एक 25-30 ही डैक्स है, इसके अलावा आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ता है. बट व्हेन आई एम कवरिंग डैक्स, अगर आप लोगों का ग्रास्पिंग पावर है, आप नोट करके रखना, हम लोग 40-45 डैक्स तो कवर करने ही वाले, वो हो गई बाय डिफॉल्ट. इसमें बोला काउंट करोगे, काउंट ए हो गया, काउंट एक्स हो गया, काउंट एक्स हो गया, सब हो गया. इफ के साथ में इफ एल्स हो गया, ठीक है, केस कंडीशन हो गया, केस के जैसे स्विच काम करता है, आपका स्विच भी हो गया, वी लुकअप हो गया, ठीक है. सो टेकिंग वन सिंटैक्स यू कैन हैव, उसके साथ में आपके 4-5 कवर हो जा रहे हैं, ठीक है. फिर आपका एग्रीगेशन से, एग्रीगेशन कितने सारे, सम, एवरेज, मिनिमम. फिर आपके डेट फंक्शन है, देयर आर ऑलमोस्ट 15 डेट फंक्शन. तो उसमें से इफ आई एम टेकिंग एंड ऑफ द डेट, एंड ऑफ द मंथ, फिर एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द क्वार्टर, आई विल नॉट टेक, बिकॉज वो सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है. So this is how I'm going to cover. एक सिनेरियो पकड़ के एक कंसेप्ट, देन सेकंड सिनेरियो सेकंड कंसेप्ट. जैसे योर फ्रैक है, योर फ्रैक में आप क्या करते हो, एज निकालते हो गिवन डेट ऑफ बर्थ पे से, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ पे से एज निकाल सकते हो, समथिंग लाइक दैट. तो मोस्टली फोकस क्या होता है कि जो रियल टाइम में आपको लगने वाले हैं ऑन योर क्लाइंट प्रोजेक्ट, वो कवर होंगे. और जैसे एकदम से मैं एडवांस टैक्स नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर कंप्लीटली न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म. सो वी विल स्टार्ट विद बेसिक, सम कैसे काम करता है, सम एक्स, आपका एवरेज, आपका इंटीजर, एंड देन स्लोली विल मूव ऑन कि जो एक्चुअली एडवांस डैक्स है ना. सो आई थिंक एक 45 to 55 का रेंज में इट शुड सम अप, है ना. हाँ, व्हाट, हाँ और हम लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे ना. हाँ, यस यस. तो देखो अभी रुचिका कैसे होगा ना, देखो अभी लाइव प्रोजेक्ट अगर आप बोलते हो ना, इनिशियल लेवल से मैं जो डेटा लेके आऊंगी ना पावर बीआई में, एवरीथिंग इज लाइव ओनली, वो सिनेरियोज विल बी लाइव. सी एवरीबॉडी नोज कि पाई चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या है. सो आई एम नॉट गोइंग एंड अंडरस्टैंड, समझाऊंगी नहीं कि लाइन चार्ट ऐसे चलेगा. एक सिनेरियो लेंगे, उसमें हम पूछेंगे कि लाइन चार्ट कैसे फिट होता है, आपको बार चार्ट देयर इज वन लाइव प्रोजेक्ट, वो बोलने के लिए है. बट इफ assignments I have प्रोजेक्ट्स मेरे पास में, you take the assignments from you, आप डेटा सेट लो, आप उस पे काम करो and send me the assignment. तो अब कहाँ से आवाज आ रहा है, कोई तो म्यूट करो ना अपने आप को, कहीं से आ रहा है पीछे से आवाज. हाँ, तो क्या होगा, वैसे तो हम लोग एक ही डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, बट आई एम वेरी मच ओपन टू प्रोवाइड यू मल्टीपल डेटा सेट्स इफ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन दैट एंड यू सबमिट विद द असाइनमेंट. तो आप मुझसे एक नहीं 4 ले लो, आई एम ओके विद दैट. That's what I want. Yes. हाँ, नो प्रॉब्लम, आराम से ले लो. और मैं सबको वही बोलती हूँ कि जितना आप प्रोजेक्ट्स पे अपने आप से काम करोगे ना, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू फेस द इंटरव्यूज, बिकॉज ट्रेनिंग करवाना, सीखना एंड डूइंग इट प्रैक्टिकली बहुत मैटर करता है. सो मैंने टैबलू, पावर बीआई में, सॉरी एक्सेल में भी, सीक्वल में इन लोगों को ऐसे किया, इंस्टॉल करो, अपने आप इंस्टॉल करो, पैरेलली मेरे साथ में काम करो. अदरवाइज सीक्वल का कोई जरूरत नहीं है. आई कुड हैव मूव डायरेक्टली टू पावर बीआई, एक हफ्ता वेस्ट ही नहीं करते. बट देन एटलीस्ट डेटा का नॉलेज आ गया, कैसे एनालिसिस करते हैं, डेटा कैसे स्टोर होता है. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ पावर बीआई इंस्टॉल करके रखो. सो सेकंड थर्ड डे से यू कैन डू इट पैरेलली विद मी. आई विल गिव यू द डेटा सेट्स, एक दिन पहले मैं आपको सेंड कर दूंगी जो भी मुझे फाइल्स लगने वाली है सेकंड डे, या फिर आई कैन सेंड यू ऑल द फाइल्स कलेक्टिवली. तो आप क्या कर सकते हो, वो सोर्सेस को कनेक्ट करके 3 फाइल सेव कर देना, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3. जैसे हम लोग चेंज करेंगे सिनेरियोस, यू कैन कीप मूविंग इनटू दैट पावर बीआई के डैशबोर्ड्स में, है ना. ठीक है, ठीक है. हाँ, और कुछ है क्वेश्चंस, बोलो. और मैं आपको लिस्ट भी दूंगी जो ऑफिस में चलते हैं ना. इन आई हैव डन 4 टैबलू पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स, टैबलू के 6-7 किए हैं. एक सेट ऑफ ऑपरेशंस है, उसके अलावा डैक्स मूव ही नहीं होता है बाहर. हाँ, अभी आपको टेंशन होगा कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से. सो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में ना आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि मुझे आप फिंगर पे काउंट करके दिखाओ कि आपने कितने डैक्स यूज किए. दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट लॉजिक यू हैव टू, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप क्या लॉजिक लगा के कौन सा डैक्स यूज करोगे. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम यू. आपको ये कोई भी नहीं पूछेगा, आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आपने अगर दिखाया प्रोफाइल पे कि आप वर्क ऑन 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स ऑफ पावर बीआई, एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक 15 से 20, बहुत हो गए 30 डैक्स पता है, बिकॉज इतना यूज ही नहीं होता है. आप अगर इतने डैक्स एक प्रोजेक्ट में लगाओगे 15-15, जस्ट इमेजिन कि वो रिपोर्ट कितना बल्कि हो जाएगा, है ना. उसका साइज तो इश्यू आएगा, मॉडलिंग में भी इश्यू आएगा. सो यू डू नॉट यूज डैक्स अननेसेसरीली. व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, देन यू टेक द हेल्प ऑफ योर डैक्स. सो अगर आपने 2 प्रोजेक्ट्स दिखाए आपके प्रोफाइल में, इट इज मोर देन सफिशिएंट कि मैंने 25 से 30 ही डैक्स किया है. हाँ, बाकी के जो डैक्स है, आई हैव द नॉलेज बट आई डिड नॉट गेट अ चांस टू डू इट प्रैक्टिकली, व्हिच इज कंप्लीटली ओके. सो व्हेन वी टेक इंटरव्यू, हम लोग तो सिर्फ यही जज करते हैं कि उसको डैक्स के सिंटैक्स पढ़ते आते हैं क्या, पहला चीज. सेकंड चीज, उसका लॉजिकल सेंस कितना अच्छा है.
थर्ड थिंग, डज ही नो कि किस सिनेरियो में उसको डैक्स अप्लाई करना है? अगर वो हर जगह डैक्स ही यूज कर रहा है, दैट मींस ही इज नॉट अवेयर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एक रिपोर्ट डिजाइन करने के, क्योंकि जब वो मेंटेनेंस में रिपोर्ट जाएगा सर्वर पे, इट इज गोइंग टू हैव इशू कैसे होगा? डेटा रिट्राइव करने में टाइम लगेगा, रिजल्ट स्लो आएंगे, द रिपोर्ट विल बी स्लो ऑन द सर्वर. So this is how basically at least the interview panel judge you when it comes to Power BI and the internal features, है ना? ओके ओके यस हाँ हाँ. तो मेरे को पता है बहुत लोगों ने हाइप बना के रखा है, बहुत जैसे भी टैब्लू में एलओडी होता है, इफ यू नो एलओडी करके कंसेप्ट है, तो वैसे ही डैक्स है. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट दिस आपका. और देखो जिसको एक्सेल आता है ना, डैक्स तो मैं बोलती हूँ बहुत इजी है, बिकॉज पावर बीआई और आई लर्न लाइक 3-4 years बैक सेल्फ लर्निंग, बिकॉज इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय प्रोजेक्ट इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन. सो यस, हम लोगों ने पहले एक्सेल किया था, सो इट इज जस्ट द एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ एक्सेल. अभी एक्सेल में एक सेट ऑफ ऑपरेशंस है, but you have a higher level of operations in your Power BI. That's it. Okay. Any questions you have, Dolly, Akshay? कुछ है? Let me know. No, ma'am. So, just No, ma'am. what's हाँ. Yes, yes. afternoon का timing? आफ्टरनून का टाइमिंग मैं एक बार ना मेरा कैलेंडर चेक करती हूँ. मेरा एक इंटरव्यू है एक कंपनी के साथ में, मैं वो एक टाइमिंग आपको मैं मैसेज करती हूँ ग्रुप में, लाइक व्हाट टाइम वी कैन कनेक्ट. तो मैं 2 टाइमिंग दे दूंगी अक्षय, आपको जो कंफर्टेबल है आपके ऑफिस आवर्स के अकॉर्डिंग, दैट टाइम वी कैन कनेक्ट. नो वरीज. ओके ओके ओके. ठीक है ठीक. हाँ. और ठीक है. सो रुचिका, यू आर नॉट ऑन वर्क, अभी जॉब नहीं ना आपका, यू हैव क्विटेड. सॉरी आपने क्या अभी वर्किंग नहीं हो ना, जस्ट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year. या अच्छा, ऐसे क्यों किया? मतलब रिजाइन कर दिया जॉब आने के पहले हाथ में, रिस्की हो गया थोड़ा ये. नहीं एक्चुअली मुझे पूरे फोकस के साथ पढ़ना था ये पावर बीआई. मैंने अभी रिजाइन किया है, तब रिसेंट है मेरा. डिफिकल्ट है थोड़ा, नहीं करना चाहिए था क्योंकि रिसेशन चल रहा है ना. बट ठीक है, एनीवेज अभी है, यू डू हैव पोजीशंस. आई आल्सो हैव 3-4 पोजीशन, बट वो 3+ years के लिए है. तो ठीक है ना, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मॉक इंटरव्यूज, सब सेशंस, वी विल कवर इट, डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट. और यू रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट गिविंग यू मल्टीपल डेटा सेट्स, आप अपफ्रंटली मुझे बोल देना, आई पास इट ऑन टू यू. मे बी मैं अपलोड ही कर दूंगी LMS पे, सो दैट एवरीबडी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग. तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, देखो डेटाबेसेस में इसमें वही है कि आपका SQL एक्सेल शुड बी बेसिक्स. बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ मैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होगा. और देखो पावर बीआई क्या, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज ड्राइविंग टूल. आज पावर बीआई है, कल चल के टूल बदल जाएगा, तो आपका बेस क्या होना चाहिए? SQL और एक्सेल. यू एग्री विथ मी? कल टैब्ल्यू था, अभी एवरीबडी इज माइग्रेटिंग फ्रॉम टैब्ल्यू टू पावर बीआई. पावर बीआई टैब्ल्यू के पहले लुकर था, क्लिक क्यू था. सो पीपल हैव माइग्रेट. अब हम लोगों ने ही माइग्रेशन किया है, इस रिपोर्ट को समझ के भी कन्वर्टेड टू टैब्ल्यू. नाउ वी आर द सेम डेवलपर्स कंपनी में जो टैब्ल्यू के रिपोर्ट्स को पावर बीआई में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो टूल इज नॉट द डेस्टिनेशन, दे आर जस्ट ड्राइविंग यू, दे आर जस्ट गिविंग यू द चेंजेस. तो आई डोंट थिंक इतना कुछ डिफिकल्ट जाएगा, बट देन या लेट्स कीप इट ऐसे, फ्लो ऐसे ही रखते ट्रेनिंग का, दैट एनीबडी डजंट नोज एनीथिंग. तो कैसे एकदम आई विल आल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत बेसिक से लेना, एंड देन वी कैन मूव ग्रेजुअली, है ना? ठीक है. ओके. सो ठीक है, मैं एक बार ग्रुप में पिंग करती हूँ, देन वी ऑल 3 of us कैन कनेक्ट एंड जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन द डेटाबेसेस. ठीक है. ओके डॉली, रुचिका, अक्षय, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you.